Hi everyone, I welcome you all to my presentation regarding some common bacterial and viral diseases of humans. Uh, Here I'm going to discuss about some nearly 7 bacterial diseases and 7 viral diseases of humans. Now continuing with the first disease, uh, arthropod transmitted bacterial disease, which is plague. Currently, in news, we are seeing that Australia is going through one of the worst rodent plagues in recent years, and New South Wales it has mentioned it as economic and public health crisis. So, plague, which is also known as Black Death, it causes mass sickness and devastation. वर्ल्ड में 3 मेजर प्लेग पैंडमिक्स हो चुके हैं, जिसमें 14th सेंचुरी का प्लेग पैंडमिक यूरोप में जो आया था उसने नियरली यूरोप की हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को किल कर दिया था। लेकिन 1894 में अलेक्जेंडर यर्सिन ने फाइनली इस प्लेग डिजीज़ के कॉजल ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया यर्सीनिया पेस्टिस को आइसोलेट किया, एंड इट वाज अ मेजर ब्रेक थ्रू। एंड दिस बैक्टीरिया, as it belongs to order Enterobacterius, it shows safety pin-like appearance when stained with methylene blue. And the characteristic of this Yersinia pestis is that ये एक ऐसा प्रोटीन सिक्रीट करता है विच इज प्लाज्मिड इनकोडेड यर्सीनियल आउटर मेम्ब्रेन फ्लूइड, जो कि बॉडी के फैगोसाइट्स को डिसआर्म कर देता है और इम्यून सिस्टम को टेक ओवर कर लेता है। So plague transmits mainly from infected rodents to oriental rat fleas, and then these oriental rat fleas bite to humans. Basically plague 3 तरह के होते हैं. First is bubonic plague, which is most common. Second is septicemic plague, and the third one is pneumonic plague, which is most virulent and fatal. Currently disease को treat करने के लिए we use antibiotics that is a bacterial disease, but in 2017 मेडागास्कर, जो कि ईस्ट अफ्रीका का एक कंट्री है, वहाँ पे प्लेग आउटब्रेक हुआ है, एंड दैट इज शोइंग ड्रग रेजिस्टेंस. So we have to prevent ourselves against this disease by avoiding flea bites, avoiding contact with dead animals, and avoiding close contact with patients of pneumonic plague. Now moving on to the next disease, it's chikungunya. चिकनगुनिया पहली बार तंजानिया में डिस्क्राइब किया गया था 1952 में, एंड चिकनगुनिया वायरस एक आरएनए वायरस है जो कि ट्रांसमिट होता है ह्यूमन को थ्रू मॉस्किटोज एडीज एजिप्टी एंड एडीज एल्बोपिक्टिस. दिस infected mosquitoes bite the humans, and after 3 to 7 days of incubation period, symptoms appear on severe joint pain, chronic arthritis. Chronic arthritis occurs when disease leads on for a month and etc., and it may cause lymphopenia, which is lowering of WBC. And इस डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए हम यूज़ करते हैं एलिजा टेस्ट. एलिजा में हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं IgM एंड IgG एंटी चिकनगुनिया एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं या नहीं. चिकनगुनिया को फेस करने के लिए हमारे पास अभी मेजर 2 चैलेंजेस हैं. फर्स्ट ये है कि there is no vaccine available, so there is constant periodic outbreak of chikungunya. And the second is that जो डेंगू वायरस डिजीज़ है, डेंगू वायरस है, उसका सिम्टम और वेक्टर सेम है चिकनगुनिया वायरस के. सो कई बार ऐसा होता है कि ये डिजीज़ मिसडायग्नोस्ड हो जाती है, मिसडायग्नोस कर ली जाती है by the doctors. And we can prevent ourselves by avoiding getting a mosquito bite, wearing long clothes, using mosquito nets, insect repellents, destroying the natural breeding sites of mosquitoes, etc. Now let's move on to the third disease. The third one is soil-borne bacterial disease, and it is tetanus. So tetanus is an acute, often fatal disease caused by the toxin tetanospasmin, produced by the soil bacterium Clostridium tetani, which produces highly resilient spores or endospores. Tetanospasmin क्या है? Tetanospasmin second most toxic substance है वर्ल्ड में. इसका 100 million of a gram कैन किल अ ह्यूमन. इसके सिम्टम्स हैं जैसे कि मसल स्पास, एथन, लॉक जॉ, स्टिफनेस ऑफ द लोअर लिम्स,
नेक और बैकबोन ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है जैसे कि धनुष की जो आर्क लाइक सिम्टम अपीयर होता है, एंड द न्यू बॉर्न्स में इन्फेक्शन पास होता है थ्रू एम्बिलिकल कॉर्ड बिकॉज ऑफ अनहाइजीनिक बर्थ कंडीशंस। रस्टेड नेल से अगर वाउंड हो गया है बॉडी पे तो भी टिटनेस कॉज हो सकता है बिकॉज द इंडोस्पोर्स ऑफ द टिटनेस क्लॉस्ट्रीडियम में बी लिविंग इन दैट रस्टेड नेल। फॉर अगेंस्ट दिस वैक्सीन डिस्कॉम्बे ने वैक्सीन डेवलप की थी 1924 में। अभी भी डेवलपिंग वर्ल्ड्स में जहाँ पे वैक्सीनेशन अनकॉमन है, वन ऑफ द टॉप 10 causes of death is tetanus. So we have to protect ourselves and we should get vaccinated in childhood, and if not then get booster shots when we are adult every 10 years. Now coming on to next disease, it is animal transmitted viral disease, hantavirus pulmonary syndrome or HPS. Hantaviruses are family of viruses which spreads mainly by rodents urine, feces, etc. Hantaviruses are RNA viruses. इसके जो अर्ली सिम्टम्स हैं 1 to 8 वीक्स में आते हैं, जैसे कि मसल एक्स मेनली इन लार्ज मसल ग्रुप्स लाइक थाइस, and then headaches. Then later after 4 to 10 days, the later late symptoms occur like hantavirus pulmonary syndrome, which appears with coughing and shortness of breath. And इस disease के against कोई भी treatment या vaccine available नहीं है, but the best part is that there is no human to human transmission, and इसको treat करने के लिए we only manage the symptoms of the patient and prevent it by minimizing contact with the rodents at home. And recently few cases has been reported in China during the COVID-19 outbreak. Now moving on to the next disease, it is waterborne bacterial disease, cholera. Cholera को हिंदी में हैजा भी कहते हैं. It is an infectious disease and it causes infection of small intestine and it has caused many pandemics in the world. According to WHO, nearly more than million cases are reported each year. रॉबर्ट कॉच, जिन्होंने ट्यूबरकुलोसिस डिजीज का भी कॉजल ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई किया था, उन्होंने कॉलेरा का भी कॉजल ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई किया 1884 में, विच इज विब्रियो कॉलेरे, अ कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया विथ 2 circular DNA, and it is of protobacteria group, so it secretes very powerful enterotoxin and which causes severe diarrhea. इस डिजीज़ के मेन सिम्टम्स हैं वाटरी डायरिया, मसल क्रैम्प्स, एंड ऐसा होता है कि कोई भी इंसान विद इन आवर्स 8 to 10 लीटर बॉडी फ्लूइड लूज कर सकता है एंड इट कैन कॉज डेथ. एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज डर्टी हैंड्स डिजीज़ क्योंकि ये प्राइमरली वाटर, वेस्ट वाटर एंड ह्यूमन एक्सक्रीटा से फैलता है, एंड वी कैन प्रिवेंट इट बाय यूजिंग बॉइलिंग वाटर इन आवर डेली कोर्स एंड ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, ईटिंग कुक्ड फूड and getting vaccinated. Now coming to the next disease, it is waterborne viral disease, norovirus. Norovirus का first outbreak हुआ था टाउन ऑफ नॉर्वॉक ओहायो में, यूएसए में है, and that's why this virus is also known as Norwalk virus. It is a RNA virus and it is transmitted by contaminated water, human excreta, unwashed hands. It causes acute viral gastroenteritis, that is inflammation of gastrointestinal system. इसके symptoms हैं diarrhea, vomiting, headache, and there are no specific medicine to treat people. So patients are nearly advised to drink plenty of liquids, prevent dehydration, and healthy people can prevent themselves by maintaining good hygiene, regular washing of hands with soap, using electrolytes in fluids, etc. Now the next disease is airborne bacterial disease, that is tuberculosis or TB. It is still one of the world's biggest infectious killer, causing more deaths. मतलब कि इसमें मलेरिया और HIV एड्स दोनों से जितनी डेथ होती है उसको मिला के भी उससे ज़्यादा डेथ होती है ट्यूबरकुलोसिस से वर्ल्ड में हर साल. So as TB bacteria is airborne, it spreads by tiny droplets of saliva from coughs or sneezes of an infected person. Its causal organism, which is Mycobacterium tuberculosis, it was discovered by Robert Koch, and he has got Nobel Prize for this in
1905 in Physiology of Medicine. क्लासिक सिम्टम्स है इसके जैसे कि वेट लॉस, ब्लडी कफ, एशन स्किन, कभी कभी इसको वाइट प्लेग भी बोल देते थे पहले के ज़माने में. Around 90% of infected TB persons don't show any symptoms. So major breakthrough इस disease को कंट्रोल करने के लिए तब आया जब BCG वैक्सीन डेवलप की अल्बर्ट काम्टे एंड कैमेल ग्यूरिन ने. सबसे पहले इसको यूज़ किया गया 1921 में. WHO का जो बोलते हैं ना कि हार्ट ऑफ स्टॉपिंग टीबी स्ट्रेटजी, इट इज़ डॉट्स ट्रीटमेंट, दैट इज़ डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट. इसमें ये इंश्योर करते हैं कि पर्सन जो भी मेडिकेशंस हैं वो ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ही शुड बी रिसीविंग द होल मेडिसिन, एंड दैट इज़ डॉट्स ट्रीटमेंट. और इसके प्रिकॉशंस हैं कि जैसे कि ऑलवेज कवर योर माउथ वाइल कफिंग और स्नीजिंग, ड्रिंक वार्म लिक्विड एक्सेट्रा. और इसके अगेंस्ट एक मेजर ड्रग आइसोनियाजिड INH, it has proven useful in treating this disease. Now the airborne viral disease and chickenpox. Chickenpox हिंदी में छोटी माता या चेचक. Airborne viral disease है, it is also called as varicella because it is caused by varicella zoster virus or human alpha herpes virus 3. It is transmitted by air and from person to person by direct contact. सबसे पहले इसको जियोवियानी फिलिपिनो ने 16th सेंचुरी में डिस्क्राइब किया था और थॉमस वेलर ने 1954 में इसको आइसोलेट किया था. इसके सिम्टम्स हैं जैसे कि रैश आता है बॉडी पर सबसे पहले, देन इची फ्लूइड फिल हो जाता है, देन टर्न्स इनटू स्कैब एज डिजीज progresses, and during this course there is high fever, headache, loss of appetite, etc. And according to WHO, more than 4 million people get affected each year by chickenpox. We can prevent it by getting vaccinated, developed by Michiaki Takashaki in 1972. For children, it is the doses are like first dose should be given at 12-15 months of age, and the second dose should be given as 4 to 6 years of age. Direct contact bacterial disease, ulcer. Ulcer, it is caused by Helicobacter pylori, which is a spiral-shaped flagellated bacteria, and it attacks stomach lining. It was identified by Beryl Marshall and Robin Warren in 1982, and it spreads from one person's mouth to other through feces, through contaminated water, food. इसके symptoms हैं जैसे कि abdominal pain, anemia, blood in the stool, excessive burping, feeling bloated, weight loss, etc. इसके treatment है कि we are advised to take antibiotics, and we can prevent it by avoiding food that irritates the stomach or stop smoking, taking non-steroidal anti-inflammatory drugs, and controlling stress levels. Now the next disease is direct contact viral disease, Ebola viral disease, EVD, also known as Ebola. Ebola एक rare but extremely dangerous disease है. It is classified as one of the most lethal diseases on planet because it has fatality rate of 90%. It was discovered by Peter Pyatt in 1976, and इसके mainly 6 species हैं वायरस के जो कि disease cause करते हैं, out of which 4 out of 6, 4 causes diseases in humans, and these 4 viruses have got their name from the location of their first outbreak, and they belong to the genus Ebola virus, and the most dangerous strain is Zaire Ebola virus. This disease is an infectious disease which spreads through contact with bodily fluids, through saliva and even sweat. And the symptoms are fever, diarrhea, vomiting, internal and external bleeding, often from the eyes, and होता क्या है कि internal organs begin to fail, and in a matter of days the body hemorrhages and the person dies. इसके लिए प्रिवेंशन के लिए है कि वैक्सीन लें और जहाँ पे वायरस का आउटब्रेक है वहाँ पे ट्रैवल ना करें, and manage it with fluids, electrolytes, oxygen, etc. And the next disease is sexually transmitted bacterial disease, gonorrhea. It is common sexually transmitted infection, and the causal organism was first isolated by Albert Ludwig Neisser in 1879. Hence, इसका नाम पड़ गया Neisseria gonorrhea, and it is a bacteria.
The patients have pain, and the symptoms are like patients have their pain around genitals, and there is a mucus discharge. In males, the disease is more severe and symptoms are more intense as compared to females. It can be passed to newborn through placenta of infected mother. If the infected और अगर infected sexual fluids eyes में enter कर जाते हैं, then they may develop conjunctivitis. And globally, 78 million cases are diagnosed each year. And the major risk factor includes the multiple sex partners, younger age, etc. And they are treated with antibiotics, azithromycin. Now, moving on to the next disease, and it is sexually transmitted viral disease, AIDS. Human immunodeficiency virus, HIV. Uh, it targets the cells in immune system, and immune system fails, and this causes immunodeficiency. HIV, because of the immunodeficiency, there is increase in risk of infection and tumor, and these complications are referred to as AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. That is, HIV leads to AIDS. HIV होता क्या है कि HIV टारगेट करता है बॉडी के CD4 सेल्स को. CD4 मॉलिक्यूल्स सेल्स के इम्यून सेल्स के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मैक्रोफेजेस के, डेंड्राइट सेल्स के जो न्यूरॉन्स में होते हैं, एंड टी हेल्पर सेल्स के मेम्ब्रेन में CD4 सेल्स प्रेजेंट होती है. CD4 सेल्स मॉलिक्यूल का काम ये होता है कि जब भी इम्यून सेल्स को कम्युनिकेट करना है आपस में, मान लो उनको कोई अटैक लॉन्च करना है किसी फॉरेन पैथोजन के अगेंस्ट, तो वो CD4 मॉलिक्यूल्स के थ्रू कम्युनिकेशन करती हैं. तो HIV को मेनली अगर किसी होस्ट सेल के अंदर एंटर करना है तो उसको दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है. पहला ये कि वो CD4 मॉलिक्यूल से अटैच हो जाए, और दूसरा ये कि होस्ट सेल के मेम्ब्रेन पे ही एक को रिसेप्टर होता है, उससे भी अटैच कर जाए. देखा ये गया है कि जो को रिसेप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कुछ लोगों में देखा गया है कि को रिसेप्टर्स में पहले से ही म्यूटेशन होता है, जेनेटिक म्यूटेशन होता है. सो दीज पीपल आर यूजुअली रेजिस्टेंट टू HIV, and that is good. But if the person is not resistant to HIV, the co-receptor is not resistant to HIV, so what HIV does, HIV molecules, HIV has GP120 protein on its envelope. This GP120 protein gets attached to CD4 molecule, and this protein also gets attached to the co-receptor of the host cell. Like co-receptors are like CXCR4 or CCR5. Now when these both attachments are made, now the HIV genome gets inside the cell. Now in the cell, the RNA uses its reverse transcriptase and produces double-stranded proviral DNA. Now this gets attached to the host DNA or chromosome, and now when the immune cells transcribe proteins, they also transcribe for virus, and the virus replicates. And during the virus replication कई बार होता है सही से रीड नहीं करता है, म्यूटेशंस हो जाता है, तो एक ही पर्सन के अंदर different strains of virus can be formed, and now these viruses infect other cells of the body. HIV का कोर्स मेनली होता है 4 stages का. फर्स्ट इज प्राइमरी, सेकेंड इज एसिम्टोमेटिक, थर्ड इज सिम्टोमेटिक, एंड फोर्थ इज HIV to AIDS. प्राइमरी में तो फ्लू लाइक सिम्टम्स, HIV ब्लड में रहता है, फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं. फिर क्या होता है कि 12 वीक्स के आसपास इम्यून सिस्टम काउंटरैक्ट करके लेवल ऑफ HIV जो ब्लड में HIV लेवल से उसको डिक्रीज कर देता है. लेकिन 10 to 20 ईयर्स ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड है HIV का. ये HIV धीरे 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 ग्रो करता रहता है बॉडी में, एंड देन chronic phase occurs where all the T4 cells target are destroyed, and lymph nodes have swollen, and the person cannot overcome this disease. So AIDS defining conditions होते हैं जैसे कि recurrent bacterial pneumonia, pneumocystis pneumonia, fungal infection, tumors. और इसका ट्रांसमिशन HIV का अगर देखा जाए तो वो यूजली होता है मेल टू मेल, मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल, एंड दिस इज ओनली 75% ऑफ केसेस. द 25% केसेस इंक्लूड इंट्रावेनस ड्रग अब्यूज और मदर टू चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा, मिल्क और थ्रू ड्यूरिंग बर्थ. इसको डायग्नोस करने के लिए फर्स्ट हम एंटीबॉडी या एंटीजन टेस्ट करते हैं, सेकेंड टेस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं एंटीबॉडी टेस्ट का, एंड द लास्ट वन और वी डू RNA DNA टेस्ट, वायरल RNA और कॉपीज ऑफ वायरल RNA DNA are
identified. We can prevent this disease by using latex contraceptive during the sexual intercourse, using clean needles, treatment with antiretroviral drug. And the next disease is foodborne bacterial disease, salmonellosis. This infection is caused by Salmonella bacteria and is typically transmitted through contaminated food, water, through fecal-oral route. It was named after Daniel Elmer Salmon. इसके symptoms हैं inflammatory response to bacteria like diarrhea, abdominal discomfort. Clinical diagnosis में usually adequate किया जाता है कि rehydration treatment हो, but कभी-कभी severe cases में सैल्मोनेला का कल्चर आइडेंटिफाई करना होता है to recognize the serotypes and then specify the antibiotics against that serotype of the salmonella. And it is confirmed by the culture of stool, blood, urine or tissue, and antibiotics like ciprofloxacin, azithromycin are used to treat this, and we can avoid getting salmonellosis by regularly due to viral infections. Hepatitis A virus HIV enterovirus ग्रुप का है. इसमें 6 फॉर्म्स हैं इसके, जैसे कि A, B, C, D, E, G. B हेपेटाइटिस B DNA वायरस है, बाकी अदर्स RNA वायरसेस हैं. एंड हेपेटाइटिस ए का इंक्यूबेशन पीरियड नियरली 30 डेज है. ये उतना क्रोनिक पोटेंशियल नहीं है इसका, ओनली 0.5% मोर्टेलिटी रेट शो करता है ये अकॉर्डिंग टू WHO. एंड दिस हेपेटाइटिस ए passes through fecal-oral route, through food, subcutaneous or intravenous, intramuscular transmission. इसके symptoms are first like viremia. Viremia means when viruses are in the blood. Then we have fever. The patient has fever, headache, fatigue, anorexia, nausea, joint and muscle pain, skin rashes, and then it enters the enteric phase. Means it enters the liver. Then there is jaundice, dark urine, hepatomegaly, that is enlargement of liver, and the last phase is convalescent phase, where it is recovery phase, and patient recovers in 1 to 2 months. Prevention is taking hepatitis A vaccine and improving sanitation, food safety, etc. Thank you all for patiently listening to the presentation, and most welcome for any questions and queries. I forgot to mention my email here. I will mention the email in the description. Thanks all.